Hi everyone, welcome back to Bioinformatics with Vaishnavi. If you are a biotechnology or life science student and you feel scared or confused about Linux, trust me, you are not alone. In this video, I will explain Linux basics for bioinformatics and also show you a live practical demo of basic Linux commands so that Linux feels simple and approachable. No coding background is required, of course. So, before diving in, let me introduce myself. I am Vaishnavi, a biotechnology graduate working in bioinformatics as bioinformatician in India. And on this channel, I simplify bioinformatics for you. So, let's begin with the basics. What is Linux? So, Linux is basically an operating system just like Windows and Mac OS we use. Linux is an open source, free to use, and widely used in research in bioinformatics. So, in bioinformatics basically Linux is a core requirement. अगर मैं बोलूँ बिना Linux पढ़े you can't work in bioinformatics in a simple term. Basically हम Linux क्यों use करते हैं bioinformatics में? Because it's fast and stable, efficient for large data, and supported by servers and clusters. This is a major points. So, without delay, let's begin with the practical part. So, let's begin the practical part. The first command we are gonna see is pwd. Basically, this command is used to check in which current directory I am present. It gives me the path of the folder or directory. So pwd, enter. See, it gives me home slash Vaishnavi. That means currently I am in my home and Vaishnavi folder. So let's create a new folder. mkdir bioinformatics with Vaishnavi. I'm gonna name my folder with Bioinformatics with Vaishnavi. So mkdir creates a new directory or the folder. Mk means make a new directory. Okay. So enter. It will create a new directory. Let's move into this directory now. cd. cd is used to enter into a directory. cd bio. See, Linux is a case sensitive language. So whenever I give any name to the folder like bio, you can see B is small. So whenever I will recall it, I will put the B in small. So bio tab key. This will automatically put the or you can say complete the name of the folder. Enter. See, now I have moved into the bioinformatics with Vaishnavi folder and let's create a new file over here. Nano. I want to name my file by txt.txt. Okay, so basically Nano is a virtual like text editor है आपका Linux का where you can edit your files, where you can write, delete, whatever you want to do. So all the scripts are created by using nano like nanotest.sh sh फाइल्स यूज होती है जनरली स्क्रिप्ट राइट करने के लिए तो अभी हम टेक्स्ट फाइल एक जनरेट करके देख रहे हैं nano.test.txt लेट्स से एंटर सो हियर सी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है लेट्स राइट समथिंग इन दिस फाइल लेट्स से आई राइट दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल okay. Now to save this file, say here are the all options present over here. I want to write out. So control O, write out means I want to write this content into this file. Now see name देना है मैं फाइल का तो मेरे को test.txt ही रखना है. So I will enter. Now these are all the options. Now I want to exit this file because I have saved the content. Now control X. Okay. See the text editor has been closed now. So let's see if this file has been created or not. So to check the content inside the directory or the folder, we used ls command. Enter. See test.txt file has been created inside this folder bioinformatics with Vaishnavi. So
Now let's say I want to copy this file. I want to copy this file with some other name. So I will use cp test.txt, the file that I want to copy, and then name of the file that I want to keep of the copied file. Let's say I want to keep with copy.txt. Okay. cp command is used to copy a file. Let's say कि मुझे test.txt फाइल को कॉपी करना है by some other name and I am keeping the name as copy.txt. Okay. Let's say enter. नाउ अब हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी में दो फाइल्स जनरेटेड हो चुकी होंगी, test.txt and one other is copy.txt. Okay, now let's see the content in the folder by ls. See, copy.txt and test.txt, two files have been generated, right? Now let's see, let's first of all create a new folder inside this directory mkdir by the name, let's say Linux. See, here I have keep the L capital. So whenever I will be using tab key to complete the name of the file or folder, I will be using L as capital whenever I will recall this folder. Okay, so mkdir Linux. Let's see if it is created or not by ls. Okay, Linux हमारा बन चुका है folder. Now let's see, I want to move this copy.txt file inside this Linux folder with some other name. Okay, so let's move this file. MV is for move. Move this copy.txt file. Move this copy.txt file inside this Linux folder by the name of copy1.txt. ओके, अभी हम इस कमांड में क्या कर रहे हैं? सॉरी, copy1.txt. ओके, सो अभी हम इस कमांड में क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं अपनी copy.txt फाइल को लिनक्स फोल्डर के अंदर बाय द नेम copy1.txt. समझ में आ गया? एंटर. सी, अब हमने मूव किया है क्योंकि फाइल को, तो ये जो copy.txt फाइल है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी वाले फोल्डर में प्रेजेंट नहीं होगी. तो यहाँ पे अभी इस वक्त दो चीज प्रेजेंट होंगी, एक लिनक्स फोल्डर, एक test.txt फाइल. लेट्स सी द कंटेंट इन दिस फोल्डर ls. सी, देखा, दो फाइल प्रेजेंट है क्योंकि हमने copy.txt फाइल को मूव कर दिया है लिनक्स के अंदर. नाउ अब हमें लिनक्स का कंटेंट चेक करना है कि सही में copy1.txt नाम की कोई फाइल मूव हुई है कि नहीं हुई है लिनक्स फोल्डर में. तो उसके दो रास्ते हैं. एक कि आप इसी फोल्डर में बैठे बैठे लिनक्स के फोल्डर के अंदर का कंटेंट को देखें, और एक तरीका है कि पहले उसका फोल्डर के अंदर जाएं और फिर उसका कंटेंट चेक करें. तो हम दोनों तरीके से चेक करते हैं. पहले हम इसी फोल्डर में बैठे बैठे लिनक्स फोल्डर का कंटेंट चेक करते हैं. सो ls, हम कंटेंट देखने के लिए यूज करते हैं कि इसी फोल्डर के अंदर. अब हमें किसी और फोल्डर का कंटेंट देखना है विच इज इनसाइड दिस फोल्डर. तो ls देन फोल्डर का नाम. ओके, नाउ एंटर. See, it gives me the content of the Linux folder copy1.txt has been created, that we have moved the file. Okay, now another way हम कंटेंट चेक करेंगे लिनक्स का. पहले उसके अंदर जाएंगे फिर कंटेंट चेक करेंगे. तो अंदर जाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया cd यूज करते हैं किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए. ओके, सो cd linux एंटर. सी, अब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी फोल्डर के अंदर नहीं है, अब हम लिनक्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं. नाउ टू चेक द कंटेंट वी विल यूज ls and see it gives the same result as before. Okay, नाउ अब मेरे को वापस लिनक्स फोल्डर से इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी वाले फोल्डर में जाना है. तो मैं कैसे जाऊंगी? cd स्पेस डॉट डॉट. दिस डॉट डॉट मीन्स इट टेक्स मी अ स्टेप बैक फ्रॉम माय करंट स्टेज. ओके, तो लिनक्स फोल्डर से मेरे को एक स्टेप बैक ले जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी वाले फोल्डर में. एंटर, एंड आई हैव कम बैक टू माय बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद वैष्णवी फोल्डर. ओके, कंटेंट चेक कर लेते हैं ls. नाउ मान लो कि आपको
पता नहीं है इस टेस्ट डॉट टीएक्सटी, आपको पता नहीं है इस टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, और आपको टर्मिनल में ही उसको ओपन करके देखना है, राइट? तो आप कैसे देखोगे? यू विल यूज cat, cat is the command to see the content inside the file, cat test dot txt. ओके, एंटर। हमने फाइल के अंदर क्या लिखा था? दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल, राइट? तो वो कंटेंट यहाँ पे टर्मिनल में शो हो चुका है बाय यूजिंग कैट कमांड। Now, last command is rm command, which is very dangerous command. मैं आपको पहले ही warn कर देती हूँ, क्योंकि जब भी आप इस कमांड को यूज करोगे बहुत ही सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि इसका जो भी आउटपुट है वो इरिवर्सिबल है। आप आरएम कमांड पहले तो यूज होती है किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। अब आप उस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे वापस, क्योंकि विंडोज की तरह इसमें रिसाइकल बिन नहीं होता, या मैक ओएस की तरह इसमें रिसाइकल बिन नहीं होता। लिनक्स में कोई भी चीज डिलीट होती है तो परमानेंटली डिलीट होती है, आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रैम की मेमोरी में से डायरेक्टली डिलीट करता है, ना कि आपके सिस्टम से। गॉट इट? So rm, let's say I want to delete this test.txt file. So rm test.txt, enter, ls, सी, ये फाइल डिलीट हो चुकी है, राइट? क्योंकि अब आपके फोल्डर में प्रेजेंट नहीं है, अब मैं इसे रिस्टोर भी नहीं कर पाऊंगी। लेट्स से कि मुझे इस लिनक्स फोल्डर को डिलीट करना है। इस लिनक्स फोल्डर के अंदर एक फाइल थी copy1.txt नाम की। तो अभी मैंने फाइल को डिलीट करने के लिए rm एंड फाइल नेम लिखा, राइट? अब फोल्डर डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? rm माइनस r फॉलोड बाय फोल्डर नेम। ओके, एंटर। सी, अब ये फोल्डर भी डिलीट हो चुका होगा। और जब मैं एलएस करूंगी तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वैष्णवी वाले फोल्डर में अब कुछ भी नहीं बचा होगा, क्योंकि दो ही फाइल्स थी हमारी, एक लिनक्स फोल्डर था, एक टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल थी, जो हमने आरएम कमांड से दोनों डिलीट कर चुके हैं। नाउ एलएस and see, there is nothing inside the folder. Okay, so in this way today's tutorial has been finished. So if you are able to understand and follow these commands, then congratulations, you have already taken your first step in Linux. You do not need to master them everything at once. Just practice slowly and consistently, you will learn them automatically. If this video helped you understand Linux basics, please like the video, share it and subscribe to the channel. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.